Hi, my name is Daud and welcome to Chalte Chalte English Literature Special. I'm very happy to see you again and I hope you're happy to see me too. Today, together, we are going to do something very special and something very amazing. Today, we will talk about Class 12, Chapter 1, the last lesson. But it is not going to be the last lesson for sure. We are going to do so many lessons and poetries and poems together in the future. This story, the last lesson, can be found in this book called Flemingo, and this story has been written by Alphonse Daudet. He is a French writer. So before we start any chapter, the first thing that we need to do is give sincere thanks and credit to the writer and the poet, because they write these stories and poems for us, from which we learn a lot of good things and moral values. इनसे हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं. तो सबसे पहले हमें we should always give due credit to the writers and poets. We should give them, so our sincere credit and thanks to the writer Alphonse Daudet, जिन्होंने ये कहानी हमारे लिए लिखी है, जिससे पढ़ के हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं. चलिए हम कहानी पे बात करते हैं, लेकिन उससे पहले I would like to remind you that it's a new, beautiful, peaceful and positive day today. So forget about all your worries and enjoy this lesson, this session and this beautiful day. ओके, तो हम शुरू करते हैं इस कहानी के बारे में हमारी बात. द लास्ट लेसन रिटन बाय अल्फोंस डॉडे. ही वाज बोर्न इन 1840 एंड he passed away. He left this world in 1897. He was a French novelist, which means he was from France. जो फ्रांस में रहने वाले हैं उनको फ्रेंच बोलते हैं, जैसे इंडिया में रहने वालों को इंडियन बोलते हैं. सेम वे अमेरिका में रहने वालों को अमेरिकन बोलते हैं. उसी तरह फ्रांस में जो लोग रहते हैं उनको हम फ्रेंच कहते हैं. He was a French novelist and short story writer. The last lesson is set in the days of Franco-Prussian War. Franco-Prussian War हुआ 1870 से 1871. उसमें जो है फ्रांस was defeated by Prussia. फ्रांस को प्रशिया ने हरा दिया था. तो उन दिनों की ये बात है. So this is a very long story. We are going to go a long back, and the best way to understand literature chapter, a story, a lesson, is to imagine that you are there in the story. You are a part of the story, or you are the writer yourself. So now you need to use your imagination. You need to think that you are in 1870. Okay, 1870 में. This is not 2021. This is 1870. यानी कि करीब 100 और 150 साल पहले हम जा रहे हैं. So we are going to use our imagination, and we are in 1870. No mobile phones, no computer, and just good old days, which we can't obviously not understand, but we can try, and trying is important. So we will try. हम 1870 में हैं. I started for school very late that morning and was in great dread of scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles, and I did not know the first word about them. So you have started your day in the morning and you are getting late for school. I want to reach to school. मुझे स्कूल पहुंचना है. लेकिन आपको डर है कि आपके जो टीचर हैं वो आपको डांटेंगे. ये आपके साथ कभी हुआ होगा तो आप समझ पा रहे होंगे कि that you are already late for school, and आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं कि मुझे स्कूल जाना है, और सर ने कहा था वो पार्टिसिपल्स के बारे में क्वेश्चंस पूछेंगे, और मुझे पार्टिसिपल्स का पी भी नहीं पता है. तो वो उस बच्चे की हालत है. And I did not know the first word about them. For a moment, I thought of running away and spending the day out of doors. And for a moment, मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं स्कूल ना जाऊँ, कहीं चला जाता हूँ बाहर, लेकिन स्कूल नहीं जाऊँगा. It was so warm, so bright. The birds were chirping at the edge of the woods, and in the open field back of the sawmill, the Prussian soldiers were drilling. It was all much more tempting than the rule for participles, but I had the strength to resist and hurried off to school. तो जब मैं बाहर निकला तो मैं देखता हूँ कितना खूबसूरत दिन है. उसके मन में ख्याल आया कि it's a new, beautiful, peaceful and positive day today, and I should not go to school. But that's not right. If it is a new, beautiful, peaceful, positive day today, that day you must go to school, because you can do, you can enjoy more, you can have more fun, and you can learn more. So he saw that it was a beautiful day. उसने देखा बहुत खूबसूरत दिन है, चिड़ियाओं की आवाज़ आ रही है, Prussian soldier भी कुछ करते नज़र आ रहे हैं. Wow, what a day to spend out. बाहर दिन गुजारने के हिसाब से अच्छा दिन है. लेकिन मैं अपने उस टेम्पटेशन को, जो मुझे वो ख्याल आया, मैं उसको रेजिस्ट कर सका और मैं फाइनली स्कूल जा सका. तो अब मैं स्कूल जा रहा हूँ.
कौन स्कूल जा रहा है? मैं स्कूल जा रहा हूँ, आप स्कूल जा रहे हैं। हम हमारी इमेजिनेशन यूज़ कर रहे हैं कि हम 1870 में हैं और हम सुबह सुबह स्कूल के लिए लेट पहुँच रहे हैं। हमारे जहन में चल रहा है सर डांटेंगे क्योंकि जो होमवर्क दिया था वो किया नहीं है। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. For the last 2 years, all our bad news had come from there. The lost battles, the draft, the orders of the commanding officer, and I thought to myself without stopping, what can be the matter now? So, वो स्कूल पहुंच गया है और स्कूल पहुंचने के बाद वो टाउन हॉल से गुजरता है तो वहाँ बहुत लोगों की भीड़ है। बुलेटिन बोर्ड के बाहर, बुलेटिन बोर्ड जो नोटिस बोर्ड और बुलेटिन बोर्ड स्कूल्स में हमारे होते हैं जिस पे न्यूज़ लगी है लगाते हैं या कोई भी चीज़ लगाते हैं जो इम्पोर्टेंट मानी जाती है, तो वहाँ से वो गुजरता है, वहाँ से मैं गुजर रहा हूँ। मैं देखा यार इतनी भीड़, यहाँ इतने लोग हैं, आज क्या बात है। और पिछले 2 सालों से जब भी कोई बुरी न्यूज़ आई है, बैड न्यूज़ आई है, वो इसी बुलेटिन बोर्ड पे आई है। कोई पास हुआ है और कोई कुछ भी खबर है, कोई बुरी खबर है, ऑल द बैड न्यूज़ had come from this bulletin board in the past 2 years. And I am thinking to myself, what could be the matter today? आज क्या मामला है? तो वो ये सोच रहा है, यानी हम सोच रहे हैं कि आज क्या मामला हो सकता है यार बुलेटिन बोर्ड पे। चलिए, तो आपने देखा कि बहुत भीड़ है, आप देखते हैं कि बुलेटिन बोर्ड के सामने लोग खड़े हैं, एंड यू हैव स्टार्टेड टू अज्यूम, आप सोचने लगे हैं कि ज़रूर कुछ गड़बड़ है। Then as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith Waster, who was there with his apprentice reading the bulletin, called after me, "Don't go so fast, Bob. You'll get to your school in plenty of time." तो मैं वहाँ से गुजर रहा था तो मुझे रास्ते में बोला उसने कि इतना जल्दी मत जाओ, तुम्हारे पास you have plenty of time to reach the school, कि तुम स्कूल इतनी क्या जल्दी कर रहे हो। बिकॉज मैं बहुत जल्दी चल रहा था, आप बहुत जल्दी चल रहे थे, लेकिन आपको रोक के बोला किसी ने यार इतनी क्या जल्दी है, आराम से जाओ। एंड इट वॉज वेरी अनयूजुअल, very unusual. I thought he was making fun of me and reached M. Hamel Little Garden all out of breath. अब आप सोचने लगे कि वो आपका मजाक बना रहा है क्योंकि आप लेट पहुँचे हो ना, मैं लेट हो गया हूँ तो मेरा मजाक बना रहा है, कह रहा है कि आराम से जाओ, बहुत टाइम है। होता है ना कि आप लेट पहुँचे हो और आपको किसी ने बोल दिया रास्ते में, अरे इतना क्या जल्दी कर रहे हो, अभी तो बहुत टाइम बचा पड़ा है। So it was like a taunt. It was like it was said sarcastically. That is what he is thinking. वो ऐसा सोच रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। उसको seriously बोला गया कि you have plenty of time. Usually when school began, there was a great bustle which could be heard out in the street, the opening and closing of desks, lessons repeated in unison, very loud, with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. But now it was all so still. तो ज़्यादातर जब मैं स्कूल पहुँचता हूँ, जब हम स्कूल पहुँचते तो स्कूल में there is a great commotion, बहुत शोर होता है, शोर in a good way, in a positive sense, कि बच्चों की आवाज़ें आ रही हैं चारों तरफ से, और बेंच डेस्क की आवाज़ है, टीचर का जो रूलर मतलब स्केल की आवाज़ है, स्केल की आवाज़ है, टेबल पे ऐसे कर रहे हैं, कौन मस्ती कर रहा है, इस तरह से वो कर रहे हैं, और कमोशन है, आवाज़ है। लेसन्स बीइंग रिपीटेड इन यूनिजन, यानी सब लोग एक साथ लेसन्स को रिपीट कर रहे हैं, सब लोग एक ही साथ बोल रहे हैं, इंडिया इज़ माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और वट एवर द लेसन इज़ बीइंग टॉट। सारे जो छोटे बच्चों की क्लास है वो छोटे बच्चे वहाँ कह रहे हैं कि जॉनी जॉनी यस पापा, सब लोग एक साथ यूनिजन में कर रहे हैं। लेकिन आज ऐसे नहीं है, आज सब एकदम खामोश है, पिन ड्रॉप साइलेंस। It was absolutely, pin drop silence. Everything was not like it is every day. This day seemed very different. आगे देखते हैं क्या हुआ है। And the teachers, but now it was all so still. I had counted on the commotion to get to my desk without being seen, but of course that day everything had to be as quiet as Sunday morning. Through the window I saw my classmates already in their places, and M. Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm, and I had to open the door and go in before everybody. You can imagine how I blushed and how frightened I was. So आप ऑलरेडी लेट पहुँचे हैं और आप देख पा रहे हैं खिड़की, अपनी क्लास में पहुँचने से पहले आपने खिड़की में से देखा कि आपके क्लासमेट्स जो हैं ऑलरेडी क्लास में बैठ चुके हैं। आप नाउ यू वांट टू गेट इनसाइड योर क्लास कि आप देखे नहीं, एंड यू आर ब्लशिंग एंड यू आर फ्राइटेंड,
आपको बहुत शर्म आ रही होता है ना, जब आप बहुत लेट पहुंचते हैं तो कभी कभी शर्म आती है, लेकिन व्हेन आई यूज्ड टू बी लेट आई नेवर फेल्ट दैट बिकॉज बट एनीवे, तो आप पहुँचे हैं बट नथिंग हैपन। हमारे जो टीचर है एम हैमिल, जो टीचर मैं उनको देख सकता हूँ अपने रूलर को यहाँ यानी स्केल को ऐसे लेके, और ही इज़ अपने क्लासरूम में वॉक कर रहे हैं, बट नथिंग हैपन। M. Hamill saw me and said very kindly, "Go to your place quickly, little friends. We were beginning without you." So I was expecting कि मुझे डांट पड़ेगी, मुझे डांट पड़ी नहीं। बोला कि यार अपनी जगह पे जाके बैठो, go to your place quickly, प्यारे little friends. We were beginning with. We are studying the story, the last lesson, and with every passing moment, it is getting more interesting to find out what happens next. Watch the next episode. So this is it for today. Thank you for joining me. I'll see you very soon again. I really enjoy spending this time with you. Peace be with you. God bless you.